Okay. Again, welcome you all in online lecture of the electrical machine 1 for the topic of single phase induction motor. So in previous lecture, we have discussed about why the single phase induction motor is not a self-starting, as well as how we have provided the phase shifting and different types of the induction motor. So this is the one of the best methodology to make single phase induction motor self-start. So according to phase shifting, the capacitor is used. The capacitor induction motor have a different types: capacitor start motor, permanent capacitor motor, and the capacitor start and capacitor run motor. So let us discuss one by one here. The first one is capacitor start motor. The here name is only indicating, that means the motor is only starting with the help of capacitor, and it's running on the main winding. So let us discuss here. First, capacitor start motor consists of two windings, namely main winding and the starting winding. And the starting winding is connected across the single phase supply in series with capacitor and centrifugal switch. ओके, ड्यू टू कैपेसिटर, द कैपेसिटर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है वो लीड होता है. ओके, तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं. द नेचर ऑफ द मेन वाइंडिंग इज, द नेचर ऑफ द मेन वाइंडिंग इज हाईली इंडक्टिव बट लैगिंग. कैसा होता है, लैगिंग होता है. सो देयरफॉर यू कैन इमेजिन हियर द करंट फ्लोइंग थ्रू मेन वाइंडिंग विल बी लैग टू वोल्टेज. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वोल्टेज को जो है लैग कर रहा है. Similarly, current flowing through starting winding is leading to voltage, and the resultant for this will be a I. I देख सकते हैं आप लोग. So angle between the IM and I is nearly equals to 80 to 90 degree, but I and V is very less. So starting torque जो होता है very high होता है. So we will discuss about the working principle. The starting torque is 3.5 to 4.5 times the full load torque. Theta varies from 30 degree to 80 degree. Starting torque can be improved. Power factor varies from 0.65 to 0.75. Efficiency जो होती है 65% to 70% होती है. Power rating जो होती है 1.8 to the 3/4 HP तक होती है. This motor have a high starting torque, therefore it is used for the hard start loads such as pumps and compressor, refrigeration unit, conveyor belt, and certain machines and tools etc. The second one is capacitor run motor. तो बताया क्या मुझे, what is the difference between the capacitor star and capacitor run motor? Yes, anybody from your class? Gayatri? इस सर जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रहती है वो ड्यूरिंग सिर्फ स्टार्टिंग पीरियड में ही काम करता है, फिर डिस्कनेक्ट कर देता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच And what कैपेसिटर is the को. difference? रनिंग में यानी वो स्टार्टिंग और रनिंग में भी दोनों में काम करता है कैपेसिटर. In simple way, we can say in capacitor start motor there will be a centrifugal switch. In capacitor run motor there is no centrifugal switch. Is it right? चलो, तो दोनों का जो वर्किंग कंस्ट्रक्शन जो है, दोनों में दो वाइंडिंग होती है, बट सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट में सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, कैपेसिटर रन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है. तो परमानेंट कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग अक्रॉस द सिंगल फेज सप्लाई. Electrolyte capacitor is not used. The rating of the starting winding, auxiliary winding, and the running winding is equal. The starting torque is very low. Okay. And here there is no provision of the centrifugal switch. That means this winding will always remains in the circuit. Characteristics देखिए, the starting torque is lower to 50 to 100% of the full load torque. Power factor high होता है because
फुल टाइम यहाँ पे कैपेसिटर होता है, इफिशियंसी 75 to 80% होती है. But the disadvantages is the motor has low starting torque, therefore used for ceiling fan, room coolers, table fans and other domestic appliances. हमारे घर में जो यूज होता है यही यूज होती है फैन वगैरह में जो होता है. ठीक है. So what is the difference between the capacitor start and permanent capacitor? Sorry, what you can say? Capacitor run. In capacitor run motor, there is no need of the centrifugal switch. हाँ. अब यहाँ पे देखिए name indicates capacitor start, capacitor run. That means what? The motor which is start with the help of capacitor as well as running on capacitor. Capacitor start, capacitor run motor has two capacitor out of which one is used to make the motor self-starting and another is used to improve the performance of while increasing the power factor. क्योंकि power factor improve भी करना बहुत जरूरी होता है. By improving the power factor, the efficiency will be a very improved. The CS means capacitor for starting and CR means capacitor for running. अब देखिए यहाँ पे दोनों की जो नेचर है वो अलग अलग है. कैपेसिटर फॉर स्टार्टिंग इज सीरीज विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग used to have a phase displacement between the main winding and the auxiliary winding is nearly by 90 degree and above. वही बताया मैंने, phase shifting is nothing but what? Phase displacement. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो कैपेसिटर है CS वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा when the speed of the induction motor is reaches to 75%. स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसके 3 to 3.5 times full load torque होता है. efficiency to improve, power factor is 0.9 approximately. सबसे ज्यादा इसका पावर फैक्टर होता है. pull out torque up to 260 of the rated torque. It combines the advantages of the capacitor start and the capacitor run. It used for the hard start loads such as the compressor, refrigerators, pump, conveyor belts. These motors are often employed requiring quiet operating motors such as the hospital studios. ठीक है. The last one is your shaded pole induction motor. Here in shaded pole induction motor auxiliary winding तो यूज करते हैं, बट ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो सिंगल फेज सप्लाई के साथ में कनेक्टेड नहीं होती है. The EMF induced in a that auxiliary winding is due to only mutual the flux linkage to the that coil. So let us discuss here. Small motor requiring only for small starting torque may be made self-starting by using low resistance copper band and the called as a shading band. आप लोगों को मैंने कुछ 2 दिन पहले शायद बताया था. The EMF induced in a shading band causes current to देखिए EMF induced in a shading band causes current to the flow in a band and the current opposes to the change in the flux to which it due to. Thus, there is a time lag between the fluxes in a shaded and unshaded portion of the pole. The flux in the shaded portion of the pole lacks flux in the other portion. The result like rotating field moving in the direction from the unshaded pole to shaded pole. The starting torque will produces. So यहाँ पे देख सकते हैं. This is the constructions view of the single phase shaded pole induction motor. It's having the main winding which is connected across the supply and it's having the yellow color जो winding दिख रही है आप लोगों को auxiliary winding है और auxiliary winding जो है वो it is not connected with the single phase supply. The EMF induced in that winding is due to the flux link with the flux जो है वो लिंक हो रहा है शेडिंग बैंड से और वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है. तो हम लोग देखिए इसको ये जो पार्ट है जहां पे कॉइल लगाई है येलो कलर की शेडिंग कॉइल उसको शेडेड
शेडेड पोल बोल सकते हैं, और जो दूसरा जो है वो अनशेडेड। ठीक है, मीन्स एक ही पोल में, जो एक पोल जो है उसको 1/3 जो है, 1/3 पार्ट जो है वो शेडेड नहीं है, और दूसरा जो है वो नॉर्मल है। ओके, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसका मेंटेनेंस जो होता है बहुत ही लो होता है, इजी टू रिपेयर होती है। और दूसरी बात, ये शेडिंग बैंड जो होती है कभी खराब नहीं होती है। अपनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कभी कई बार जल जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव करंट, बट यहाँ पे शेडिंग बैंड कभी डैमेज नहीं होती जनरली। लो स्टार्टिंग टॉर्क, मैंने आप सभी को पहले बताया कि लो स्टार्टिंग टॉर्क है 0 to 0.4 to 0.8 times to the full load torque. The efficiency is up to only 35% approximately. Power factor is 0.5, 0.45 approximate. Full out torque is 15% of the full load torque. पावर रेटिंग जो होती है 2.5 वैट टू 40 वैट तक होती है। ठीक है, because of their starting torque, the low power factor, the poor efficiency, such a motor are suitable only for power low power applications such as toys, portable fans, electric clocks, hair dryer, slides, projectors, humidifiers, small business machines such as photocopying machines, vending machines, advertising display, etc. So this was about all single phase induction motor. In next lecture we will discuss about two field revolving theory and cross field revolving theory, जिसमें आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि हाउ इंडक्शन मोटर कैन